Good morning to you all. Dear student, as you know all, earlier we have completed up to chapter 5. Now today I am going to start your lesson 6. Name of your chapter is Manufacturing Industries. What is a meaning of manufacturing industries? Actually, dear student, manufacturing means निर्माण and industries means उद्योग. तो हम कह सकते हैं ऐसे उद्योग जो निर्माण कार्यों में संलग्न हैं, लगे हुए हैं, उसे हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. इजेक्ट हिंदी होगी विनिर्माणकारी उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. Dear student, here is written the literal meaning of manufacturing is to make a products by hand. Normal meaning is to make a product by hand, means हाथों से किसी भी चीज़ को बनाया जाए तो हम उसको कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स टू मेक अ प्रोडक्ट बाय हैंड, हाथों से किसी चीज़ को बनाना. बट इट हैज़ अटेंड अ वाइड मीनिंग इन द प्रेजेंट सिनेरियो. वर्तमान दृश्यावली में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिनेरियो? सिनेरियो मीन्स जो हमें दिखाई दे रहा है उसको हम बोलेंगे सिनेरियो. रिमेंबर इट. सिनेरियो मीन्स जो हमें अपने आसपास दिखता है उसको हम बोलेंगे सिनेरियो. तो जैसा कि मैंने बताया, सिनेरियो मीन्स दृश्यावली. रिमेंबर इट. The conversion of raw material into more useful and valuable commodity. The conversion means what? Change their form. Conversion of raw material. Raw material means कच्चा पदार्थ, जिनसे हम चीज़ों को बनाते हैं, हम उसे बोलेंगे रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ. और रॉ मटेरियल्स को हम क्या करते हैं? हम कन्वर्ज कर देते हैं. कन्वर्जन का मतलब हम उसको, उसके रूप को बदल देते हैं. तो द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू मोर यूजफुल एंड वैल्यूएबल कमोडिटी. कमोडिटी मीन्स वस्तु. जैसे सपोज आप कर सकते हैं कि आयरन ओर हम लेते हैं नेचर से, और उस रॉ मटेरियल को डोलामाइट, लाइमस्टोन, इन सभी पदार्थों की मदद से हम उसके रूप को बदल देते हैं, जिससे हम पिग आयरन बनाते हैं. और पिग आयरन में क्रोमियम, निकेल को ऐड करके हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं. तो बाय दिस वे आई थिंक यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू वैल्यूएबल आइटम्स, valuable commodity, and such conversion take place with the help of machineries or any tools. But remember it, these all events done by the presence of human being also, because as we know now these days in present scenario, machineries are able to convert any raw materials into valuable items. But who operate these machineries? मशीनों को चलाएगा कौन? तो लोग ही उसको ऑपरेट करेंगे. तो लोगों की मदद से और मशीनों की मदद से रॉ मटेरियल को हम एक वैल्यूएबल थिंग्स में बदलते हैं. दिस टोटल प्रोसेस इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण. द कॉमन एग्जाम्पल्स: processing of iron ore to get steel,
जैसा कि मैंने पहले बताया, एक उदाहरण बताया जा रहा है कि आयरन ओर को कैसे हम स्टील में ट्रांसफ़र करते हैं. कॉटन टू गेट क्लॉथ्स which grow in the Maharashtra, especially in Black Swale area. There is follow several process like oating, like thread making process, weaving, thereafter stitching, thereafter finishing, iron. Then we have prepared clothes from the market. So we can say very long method take place. Thereafter such raw material convert into valuable items. Wood to get pulp. Pulp means small pieces of wood is known as pulp, which further used for making paper, either plywood we can say. And then paper means wood turn into pulp and pulp thereafter turn into paper. This one is the also paper industry's process given here. It is important to understand that more the raw materials it change in its form through processing, greater is its value and utility. It means what? When processing take place, then what happened? Then we can say turn into change their value and utility we can say. Earlier the price of raw material is cheaper, but when turned into valuable and any useful things, then it's have more importance. For instance, here is written instance. Instance means उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल बताया जा रहा है. फॉर इंस्टेंस द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ आयरन ओर increases multifold when it is converted to steel. Before conversion of iron into steel, the value and utility cannot increase. India sell iron ore to Japan at a very cheaper rate, but prepared watch and several toys which sell into Indian markets, they by this way they earn huge amount of money we can say. It value further enhance when it is transformed into machines and tools. Enhance means प्राप्त कर जाना. तो मशीनों के इस्तेमाल से जब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंजेस ऑफ forms, changes of particular forms into another forms known as transformation. Similar word used here, transformed. तो जब उसका रूप बदल देते हैं मशीनों और टूल से तो उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है. तो these are the few explanations regarding the first paragraph. Here is given one do you know, try to understand. Industrial development is recognized as a yardstick for measuring the economic development of a country. This line also asked as a long question sometimes. Industrial development is recognized as a yardstick for measuring the economic development of a country. Justify the statement. We can say if any country have more industries, it's a proof that there is higher productions, and if production is higher, it's also proof that there is large number of consumer who presents in the same country. Either country able to sell into international market. By this way, by following these all process, country able to earn huge amount of money, which have impact on the economic growth, either economic development of the country. That is why industrial development recognized as a yardstick, means एक मापने का पैमाना है for the economic development of a country.